Good evening. Good evening. Okay. Good evening. Voice is clear? Yes, sir. Okay. So, good evening. Good evening. Good evening. So, today let's start the discussion of interplanar spacing, right? I forward some question and some student have solved and sent me back. But I just gave you a formula, right? But didn't means discuss a lot about that. So let's discuss about the interplanar spacing. Okay, so the today's topic is interplanar spacing. Interplanar spacing. I don't think I need to means explain what are the interplanar spacing is. Hopefully you all guys know properly while discussing about the concept of Miller indices, right? So today we will derive the relation. You all guys know that the relation is DHKL. I also wrote there, that is 1 upon root under h square by a square, k square by b square, and l square by c square. So this is our relation for the interplanar spacing. Right? What is HKL here? HKL are the Miller indices. And A, B, and C are lattice parameters. ठीक है? तो चलो एक बार देखते हैं. Let's derive this relation. So for deriving this relation, what I will do, see, just take the right hand coordinate system. Okay, consider the origin here O. I am assuming there is a plane which is passing through the origin first of all. Okay, this plane will not be visible in the main diagram. Okay, this you have to assume that okay, this is the plane which is passing through the origin, and there's parallel one more plane, okay, which will pass through parallelly to this plane, and we have to find this distance, right? We have to find this distance. This distance will be the interplanar spacing. यही तो होगी ना भाई, मैंने क्या बताया था, दो प्लेन्स के बीच में the distance between these two planes all are equal for the fixed HKL. So we are basically finding out this interplanar spacing. Okay, so this distance will be your interplanar distance or interplanar spacing. So let's find out. For this, what we will do, I will not use this diagram. Okay, see, just I'm making a diagram here. There will be three axes, obviously, you all know. This will be your X, this will be your Y, and this will be your Z. And OX, OY, and OZ are mutually perpendicular. Because yesterday I told you that all the discussion we are doing here is only for the direction for the lattice actually whose angle are at a 90 degree. Okay, like the cubic system, tetragonal system, orthorhombic system. Okay, हम यहाँ पर सिर्फ उन्हीं की डिस्कशन कर रहे हैं जिनके तीनों एंगल इक्वल हैं और वो 90 डिग्री हैं. Okay, so these three axes will be perpendicular to each other, that is at a 90 degree. Okay, now let's do one thing. Join all these lines, means इन तीनों पॉइंट से मिलाकर हम एक प्लेन बनाने वाले हैं. ओके, ठीक है. एक्चुअली थोड़ा सा बड़ा डायग्राम बना लेते हैं, है ना, क्योंकि अभी एंगल दिखाना होगा ना तो थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है. थोड़ा सा बड़ा बना लेते हैं.
This is your Z, this is your Y, and this is your, okay. This is our origin O. Please making this diagram with me on your notebook. See, the derivation is not important, okay, but you guys must know that how this relation come around, okay. ये कैसे आ रहा है, कैसे आता है, कि आपको पता होना चाहिए, okay. So I am taking these 3 points, and while considering these 3 points, we are making a plane here. मैं अगर क्या कर रहा हूँ, एक plane बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, okay. Yes. Okay. Now, tell me, can you anyone tell if the, let's consider if the Miller indices of this plane, basically this is a plane now. तो अगर plane है तो इसका कुछ indices होगा. So let's suppose the Miller indices of this plane is H, K, and L. Clear? Okay. Now tell me what will be the intercept. Let's suppose I name this intercept as A, this as B, and this as C. What will be the intercept OA? A by H. A by H. A by H होगा ना इसका intercept. Okay, so the coordinate of this point will be A by H 0 0. Clear है? Similarly, what will be the intercept at B? So A by K. 0, A by K. I see. I am not taking A means I am not taking cubic lattice here. I am doing a means general. I am doing a general means derivation. So we will take B here actually. Okay. हम A, B, C तीनों के टर्म में निकालेंगे. Then we will see if there is a cubic system or tetragonal system. Okay. So it will be B by K, comma 0. Similarly, what will the coordinate of C? 0 0 C by L. C by L. Okay, यहाँ तक clear है? Now, this is the plane, and I told you that there is one more plane which is passing through the origin, which is not shown here. Okay, from that plane, I am making a perpendicular distance at this plane. ठीक है ना? मैंने क्या किया? उस plane से एक distance ले ली D. ओके बेसिकली यहाँ पर हमारे एक इमेजिनरी प्लेन है ना जिसको हमने कंसीडर किया है. वी हैव कंसीडर एन इमेजिनरी प्लेन व्हिच इज एट द ओरिजिन. सो फ्रॉम दैट प्लेन वी हैव टेकन ओके फ्रॉम दिस प्लेन टू दिस प्लेन द डिस्टेंस इज d, एंड दिस d वी हैव टू फाइंड आउट. एक्चुअली दिस इज अ DHKL. इसी को हमें फाइंड आउट करना है. लेट्स सपोज दिस पॉइंट द नेम एज m. इसको हमने नाम दे दिया m. यहाँ तक क्लियर है? क्लियर एवरीवन? नाउ do one thing, just touch means just connect this m point with all the 3 point in intersect point A, B and C. See, there is nothing called physics here, only mathematics and geometry is going on. Okay, physics बस इतना ही है कि origin से taking the one plane at the origin and I am means measuring a distance small d to the other planes. Okay, उसके बाद जो भी हम करेंगे that all will be the mathematics. So now we have to join this m point with all A, B and C. Okay, so I am joining this. m को B से connect कर दिया, and we have supposed that let the angle between m and B, OMB, let's suppose this is beta. Let's suppose this angle is beta. Clear है? Visible है? Okay. Let's suppose this angle is beta. Now, I am connecting this m point to this C. Okay, and this angle as, let's suppose this angle will be considered as gamma. And this point, m point to the A point. m को A से कनेक्ट कर दिया. ओके, आई एम लेटिंग कंसीडरिंग दिस एंगल एज अल्फा. क्लियर है? ये सबको समझ में आ रहा है हमने क्या किया ज्योमेट्री में? ओके, वी हैव कनेक्ट दिस m point to all the A, B, C, and in the triangle OMB we have taken the angle is beta between m and B, and angle gamma for the C and angle alpha for the A. Okay,
Now onwards is quite easy, I guess. It's quite easy. We have to see each triangle one by one. Each triangle means triangle OMA, triangle OMB, triangle OMC. Okay? We have to see the triangle one by one and let's see what happened next. Okay? So, yes? Sir, can you repeat the last part of the slide? You were not audible with my slide. Okay, wait. I just said it is visible. Clear है सबको दिख रहा है? Yes, sir. Okay, I am saying that we have just joined the point M to the A, to the B and to the C and assume the angle beta, alpha and gamma. Now what we will do, we will take a three triangles particularly OMA, OMB, OMC. हम इन तीनों ट्रायंगल को वन बाय वन स्टडी करेंगे एंड लेट्स सी व्हाट कम्स आउट. Just take first of all take the triangle OM and A. Triangle OM and A. Now tell me, if we talk about for the cos of alpha, I means denoting this triangle particularly here. If you guys feeling uncomfortable, okay. I hope आप clear होगा, है ना? O, M and A, and this angle is alpha. Can anyone tell what will the value of cos of alpha? What is the value of cos of alpha? Sorry? Tell me with the naming. जो मैंने जो naming दी उसके according बताओ. What will the value of cos alpha? OM upon OA. Okay. What is the value of OM here? OM की value हमने define कर रखी है ना? OM is a DHKL, right? OM is DHKL. And what is the value of OA? A by H. So we have got our equation number 1. Right? Now, similarly, we will find with the triangle OMB and OMC. So let's see what we get. By symmetry, what you should get? आपको क्या मिलना चाहिए? Yes, exactly. So should I means split in the triangle form or should I write directly? Yes, if anyone's facing problem, they can tell. So the cos beta will be what? OM upon OB, right? Cos beta will be OM upon OB. What is the value of OM? It's again DHKL. And OB is what? B by K. Okay, this is our equation number 2. And similarly for the cos of gamma, we will get OM upon OC and it will be DHKL divided by C by L. This is your equation number 3. Okay. Now, we have got the equation 1, 2 and 3. Since OM is a straight line, so can we use one basic property of a straight line which is direction cosine? Yes. What is the property of direction cosine? Yes, good. The property from the property of direction cosine, I'm directly writing here. Okay, it will be cos square alpha plus cos square beta plus cos square gamma should be equal to 1. इस रिलेशन में अगर किसी को प्रॉब्लम है, they can contact me personally on a WhatsApp. Okay, it's a very basic 11th class thing. Okay, the basic from the direction cosine. Now just put all the means 1, 2, 3
equation and put the value of cos alpha, cos beta and cos gamma here. Okay, means erasing this one, no need. Now, so the cos alpha is how much? Cos alpha is d divided by a by h, and since it is square, so it will be d square by a by h whole square plus d square divided by b by k whole square, and similarly it will be d square by c by l whole square, and it must equal to 1. Okay, right? So we can write here, take d square as a common, it will be h square by a square plus k square by b square plus l square by c square, and it is equal to 1. Now we have got our desired relation. Okay, just send it to the denominator of 1 and you will get your required relation, right? So your required relation will be what? D square is equals to 1 upon h square by a square plus k square by b square plus l square by c square. And if you talk about the DHKL, it will be 1 upon root under h square by a square plus k square by b square plus l square by c square. This is your required relation. Anyone has doubt? किसी को कोई problem? सबको derivation clear है? Okay. Basically, you don't need to go in the derivation part. It's just for your information. But you have to give special attention to this relation. Okay. Because without this relation, you can't do the question of X-ray diffraction. Okay. So this is about the general relation. But remember, this is for किसके लिए है? Whose? Yes, parallel नहीं, perpendicular, जिनके axis perpendicular होंगे, okay, orthogonals होंगे, right? Now, let's see some of the special cases while considering this relation, okay? Let's solve. Now, let's see first of all, see about the simple cubic. Simple cubic or cubic, not simple cubic, for the cubic lattice. It will contain simple, FCC and BCC both, all. So the cubic lattice. So for the cubic lattice, we know that A is equal to B is equal to C. So when you will put A, B, C equal, then the denominator will be equal and it will go upside out of the square root, and your relation will become DHKL is equals to A upon root of under h square plus k square plus l square. Okay. Similarly, if you talk about the tetragonal lattice, that is A equals to B but not equal to C. Just put the two lattice parameter A and B equal and left other one. So your relation will become HKL will be equals to 1 upon root under h square plus k square by a square or b square, whatever you want to write, plus l square by c square. Okay. And for the orthorhombic, you will get this relation directly. Orthorhombic. ठीक है ना, ऑर्थोरॉम्बिक लिए तो ऐसे ही रहेगा ना, तीनों लैटिस पैरामीटर अनइक्वल होते हैं, ऑल द लैटिस पैरामीटर आर अनइक्वल. क्लियर? Okay, but one more thing I want to tell you that there's a means in any TIFR exam or JEST exam, I saw a question from simple interplanar spacing for the hexagonal lattice. For the hexagonal lattice, they asked
So I have just I will just write down the relation, the formula here. I will not go in the derivation part of hexagonal because it's quite complicated and it is out of syllabus for you. But somehow in any exam randomly, if they can ask for the hexagonal lattice, I'm writing down the relation. Please write down everyone. And you have to memorize that relation, okay? And the relation is, I'm writing down here. For the hexagonal lattice, the relation is DHKL is equals to 1 upon it is 4 by 3 h square plus k square plus hk, h square plus k square plus hk divided by the a square, okay, plus L square by C square. This will be your relation. Okay, this will be your relation for the hexagonal lattice. L square plus C square P square root में है नीचे का. पूरा का पूरा स्क्वायर रूट में, सब स्क्वायर रूट में, from beginning to end. Okay, you have to memorize. This is 4 by 3 actually. This is 4 by 3 for the hexagonal lattice. Okay, देखो हमें पता है ना that A is equals to B but not equal to C in hexagonal. So the denominator has been arranged. ये तो हमें पता ही था ऐसे ही होने वाला है, just like tetragonal. But numerator portion is deviated. So this deviation is come from the angle. We know that gamma is 120 degree. Gamma 120 degree पे होता है ना, तो ये पूरा फैक्टर उसकी वजह से डिस्टॉर्ट हो जा रहा है और कुछ ऐसा आ रहा है. Okay, so you will have to memorize this relation for the hexagonal. Okay, it's quite easy actually. Okay. सर हेक्सागोनल के लिए मिलर इंडिसेस कैसे निकालेंगे? मिलर इंडिसेस हेक्सा वो आपको दिया रहेगा ना, दैट विल गिव यू. वो आपको देखो मैंने बताया था ना, मिलर इंडिसेस का जो भी हमने कॉन्सेप्ट किया है, व्हाटएवर कॉन्सेप्ट वी हैव डन फॉर द मिलर इंडिसेस इज जस्ट फॉर द ऑर्थोगोनल लैटिसेस. ओके, एचकेएल के लिए पूरा का पूरा सिस्टम ही अलग है, उसमें मिलर इंडिस का ये कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा. जो हमने किया है ना, व्हाट वी हैव डन, दैट शुड बी नॉट अप्लाई ऑन द हेक्सागोनल लैटिस. Okay, so if they will ask the question on the interplanar spacing for the hexagonal, they will give you the simple Miller indices or HKL coordinate. You don't need to worry about that. Okay, I just made the writing down. मैंने इसको बस लिखवा दिया है, ठीक है ना, just for your information कि अगर in case, वैसे तो बहुत मुश्किल है, hexagonal ही जब जल्दी नहीं आता है तो ये तो बहुत मुश्किल है, but in case अगर आ गया तो आप इसको कर दोगे, ठीक है ना. हमें देखना सब कुछ है. Okay, whether it is our syllabus or not, जो भी हमारे रडार में हम सब कुछ देखेंगे, right? Now let's start with some questions. Some students have sent me back, but for the remaining student I want to solve all this question, and today I have sent this on your group. Just look at this. First of all, the first question number 4, GATE 2012. GATE 2012 सबको दिख रहा है? एवरीवन? किसी के पास नहीं है किसी रीजन से, तो मैं यहां पर उसको क्वेश्चन लिख सकता हूं. यस, क्वेश्चन 4. yes, question number 4, GATE 2012. Question number 4, GATE 2012. A simple cubic crystal with lattice parameter AC undergo transition into the tetragonal structure with lattice parameter AT equal to BT is equal to root 2 AC. This question. And CT is equal to 2 AC. And we have to find the ratio of the interplanar spacing of 101 plane for the cubic and tetragonal structure. It's quite easy. Just use this relation. Karo sab log, solve everyone. I'm solving here. It's a question from GATE 2012. Okay. Question says for the simple cubic, AC is equal to BC is equal to CC, right? A diya na? Means all are equal, so we can say at AC.
And for the tetragonal, the relation is given as AT is equal to BT is equal to root 2 AC. Root 2 AC, and AC is also given in terms of CT, that is CT is equal to twice of AC. Yes, solve किया किसी ने? And the plane, that is HKL, here is 1, 0, 1. All the information has been given. Just solve कर लो सब लोग. If anyone facing problem, I am solving here for them. किसी को प्रॉब्लम हो रहा है? ओके, नाउ चलो मैं सॉल्व कर देता हूं. सी, just use this relation for the simple cubic, like DSC. So it will be how much? All the lattice parameters are equal, so it will be simply AC upon root under h square plus k square plus l square. Okay, what is the value of HKL? 101. So it simply becomes AC by root 2. Right? Equation number 1. For the tetragonal, dt. Okay, for the dt, it is written as 101 plane. That means k will be 0. K will be 0. Okay, so it will be 1 upon 80 square plus, okay, 0 upon bt square plus 1 upon ct square. Okay, just it will be 0, middle part will be 0. Just put the value of 80 in terms of AC and put the value of CT in terms of AC. Okay, and divide both the equation. You will get the ratio DSC upon DT will be, I guess, under root 3 by 8, right? Yes. Root 3 by 8 is the correct answer. Yes, root 3 by 8. किसी को प्रॉब्लम है पूछ सकता है, इसके आगे भी सॉल्व कर दूंगा वैल्यू रख के. इफ एनीवन, किसी को प्रॉब्लम है? सबका हो गया? गुड. चलो आगे बढ़ते हैं. सॉल्व द नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम द GATE 2015. Question asks, the lattice parameter ABC of an orthorhombic crystal are related by A equal to 2B equal to 3C. This is for GATE 2015. 0.8. GATE 2015. Okay, and basically what we have to find in the unit of A, the interplanar spacing for 110 plane. For the plane 110, we have to find DHKL in terms of A actually. Okay, for the orthorhombic crystal. This is for the orthorhombic crystal. For the orthorhombic crystal. सॉल्व किया किसी ने? कितना आ रहा है? Anyone has solved? 0.447. Yes, 0.447 is the correct answer. See, it's quite trivial, I guess. It's DHKL is equals to what? Just write down the relation first. H square by A square, K square by B square plus L square by C square. Okay, किसी एक को रोक लो और बाकी दोनों की वैल्यूज उनके टर्म्स में आप रख दो. ओके, ये रिलेशन आपको गिवन है ना, दैट इज A इक्वल टू B इक्वल टू 3C. आपको बस यहाँ पर मैनिपुलेट करना है. एक्चुअली द प्लेन इज 110, सो L स्क्वायर बाई C स्क्वायर विल बी लेफ्ट आउट. ठीक है ना? आप जब इसको सॉल्व करोगे, आई गेस यू विल गेट A by root 5 in terms of fraction. I have solved this, A by root 5. Okay, and when you solve this, you will get 0.447A. And the answer has been asked in terms of lattice parameter. Okay, so your answer will be 0.447. Clear है? Okay, now one more question I guess I have sent you regarding this. Yes,
Third one. No. The distance, no, I have not sent. I am writing down here the distance between one plane, one plane in a FCC crystal. I am writing down here. Please write down, everyone. The question is the distance between one planes. The distance between one planes in FCC lattice, in a FCC crystal lattice, and it is given as 2 angstrom. It is given as 2 angstrom, and we have to find the lattice parameter. We have to find the lattice parameter. See, these questions are very easy, I know. Okay, but पढ़ लिया इसलिए easy लग रहा है. I don't know how कि कुछ और बात है, but ऐसा ही है ये, ठीक है. ये एक सिंपल रिलेशन है. इसका जो मेन 3.46 angstrom, good. We have done it. ठीक है ना. बट बेसिक इसका जो यूज है ना वो XRD में, एक्सरे डिफ्रैक्शन में, द बेसिक यूज ऑफ इंटरप्लेनर स्पेसिंग इन द XRD. ओके, वी विल सी दैट. सॉल्व हो जाएगा ये, क्लियर है ना. D is equals to A upon root 3. 3.46 angstrom. Okay, so the value of A will be 2 root 3. यही होगा ना, और कुछ है. ओके, सॉल्व कर लेना इसको, and this will be the angstrom, right? Okay, so here we end the concept of, means all the discussion of the, yes. ये क्वेश्चन में भी FCC पूछा है, लेकिन और भी कोई क्यूबिक लैटिस होता तो उसके लिए भी ये सेम ही है. बिल्कुल BCC होता, FCC होता, सिंपल क्यूबिक होता, तीनों के लिए लैटिस पैरामीटर इक्वल होते हैं ना. ओके, नाउ let's move further, and our next topic is very famous. It is X-ray diffraction. X-ray diffraction. Okay? चलो कुछ बात कर लेते हैं इसको शुरू करने से पहले. सी 2D sin थीटा इक्वल टू n लैम्डा तो सब लोग जानते हो, ठीक है, क्लास 12 से ही पढ़ते आ रहे हो. All have studied, I guess, 2D sin थीटा इक्वल टू n लैम्डा, and literally it is, but उसके पीछे भी कुछ कहानी है, ठीक है ना, उसके बारे में बात करते हैं. कोई जानता है? सबसे पहली बात तो why the XRD is quite important. Why the XRD is quite important? इतनी हम क्यों बात करते हैं condensed matter physics में? Can anyone tell the answer? देखो हमने we have studied the simple. X-ray is comparable to the direct. You are telling me the process. I am asking why X-ray diffraction concept is quite important. Yes, see, you are giving the right answer. See, we have studied the simple cubic. We have seen the body centered, hexagonal closed pack, ये वो सब पढ़ लिया. हमें ये पता है, we all know that in the simple cubic there is a 8 atoms at the 8 corners. हमें ये भी पता है BCC में एक सेंटर पे, बॉडी सेंटर पर आ जाता है. ओके, हमें ये भी पता है ओके द लैटिस पैरामीटर्स कुछ इतने होते हैं. हेक्सागोनल कैसे बिहेव करता है, सब कैसे पता चला है? सबसे द वेरी ट्रिवियल क्वेश्चन, हाउ डिड वी गेट टू नो दैट ऑल दीज थिंग हैपनिंग इन द क्रिस्टल? कैसे हो रहा है ये सब क्रिस्टल में? बेसिक सा सवाल है ना. Crystal is means where on a microscopic level, how we have find out all these data. हमें ये सब कैसे पता चला? So the answer is X-ray diffraction. Answer is X-ray diffraction. Okay. See, I'm again telling, don't get bored. Okay, it's just a story type of thing. 2D sin theta and lambda सभी जानते हैं, उस पर क्वेश्चन भी हम भर भर के कर देंगे. Don't worry. But how it came? ये कैसे आया है?
लॉ का इसमें क्या रोल था, ब्रैग्स का इसमें क्या रोल था, लॉ को क्यों इंपॉर्टेंस नहीं मिली ब्रैग्स के सामने, ये सब भी जानना जरूरी है ना. ओके, लिसन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, in 1895 Röntgen had discovered X-ray. ये सबको पता है. X-ray was discovered. X-ray was discovered. Okay. Now, भाई discover तो कर लिया. We have find that there is any some random ray which we have find out. But how this ray is behaving? What is the wavelength of this ray? ये सब कुछ भी पता नहीं चल पा रहा था. ओके, वी वर नॉट एबल टू गेट ऑल दिस डेटा. हमें ऐसा कुछ भी पता नहीं चल पा रहा था. वेव नेचर शो करेगा, पार्टिकल नेचर शो करेगा, which nature means this X-ray will show wave, particle. Someone was saying okay, this will behave as a particle. Someone was saying it will behave as a wave. Someone was saying it will behave as a transverse wave. Someone was saying that it will behave as a longitudinal wave. But ये सब कहानी चलती रही, कुछ पेपर्स भी पब्लिश हुए, इसका एप्लीकेशन भी शुरू हो गया. द एप्लीकेशन ऑफ द एक्सरे हैज आल्सो बीन स्टार्टेड लाइक इन द मेडिसिन और इन द डिफरेंट सेक्टर. बट चीजें अभी वहीं की वहीं थी. फॉर द क्रिस्टल्स, वी आर टेकिंग बेसिकली टॉकिंग अबाउट हियर द क्रिस्टल ना. फॉर द क्रिस्टल द थिंग्स वर रिमेन एज इट इज एट देयर प्लेस. जब ये सब नहीं हुआ था, XRD नहीं आया था, तो सबसे पहला जो एक बेसिक कॉन्सेप्ट था जो सबके दिमाग में क्वेश्चन आता था, पता है क्या? कि जब स्नोफॉल होता है, जब रेन होता है, जो स्नोफॉल होता है, तो भाई बेसिक सा सवाल था कि इस रेन का जो स्नो होता है उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो इतना प्रिसाइज कैसे होता है? हाउ डू द स्ट्रक्चर इज सो प्रिसाइज? भाई सभी एक ही तरह के गिर रहे हैं. भाई कभी बर्फ गिरते हुए देखा है अपने अपने घरों में? ऑब्वियसली सबने देखा होगा, ठीक है ना. सबके मन में होता था अच्छा बर्फ को छोड़ो, कोई भी क्रिस्टल है कि कैसे इसी शेप में है, हाउ द शेप इज सिमिलरली, कैसे है, क्या कुछ तो हो रहा है इसके अंदर. देयर इज समथिंग हैपनिंग इनसाइड दिस, बट नो वन हैव द आंसर. किसी के पास कोई आंसर नहीं था, राइट? किसी के पास कोई आंसर नहीं था, सब कुछ ऐसे ही चल रही थी. देन वन डे लॉ, आई एम राइटिंग द नेम LAUE, he was a scientist. He said one statement. इन्होंने अपना एक स्टेटमेंट दिया, ओके. एंड द स्टेटमेंट वाज if crystal are arranged in a periodic manner of atoms, I am writing down here, if इनका स्टेटमेंट था किसका? लॉ थ्योरी. If crystal are arranged in a periodic manner, if the crystal are arranged in the periodic manner of atoms, अगर उसके अंदर ऐसा कुछ है, अगर उसके अंदर एटम्स हैं, manner of atoms, and X-ray is behaving as a wave, and X-ray is a wave. You can directly say if X-ray is a wave. अगर ऐसा है, भाई लॉ ने क्या कहा कि ठीक है, सब डिस्कशन बंद करो, मैं बताता हूं. If crystal are arranged in a periodic manner of atoms and X-ray which we have got is a wave, अगर ये दो है तब तो हमें एक बहुत ही बड़ी चीज पता चल जाएगी. क्या? then the crystal should act as diffraction grating of X-ray. भाई डिफ्रैक्शन तो आ चुका था ना, तब तक डिफ्रैक्शन तब तक आ चुका था. So what law said कि अगर ऐसा है, if these two conditions are satisfied, भाई जो को भी पता नहीं है क्या है, बट अगर ऐसा है that periodic manner में अगर atoms arrange हैं and X-ray is a wave, then this X-ray should diffracted while hitting these atoms. भाई simple सा logic था, okay. Then
we should get, then we should get what? The diffraction. We should get the diffraction. भाई हमें diffraction मिलना चाहिए. But diffraction की क्या condition है? What are the condition of diffraction? The incident wave should have the order, उसका जो wavelength होगा, that order must be or approximately equal to the obstacle. यही है ना? तो इसके wavelength के बारे में कुछ नहीं पता चल रहा था, but when law performed their experiment, उन्होंने जो अपना experiment perform किया, they got succeed. वो सफल हो गए. एक्सरे का हिटिंग उन्होंने कराया क्रिस्टल पर and the ray got diffracted. Okay, and the ray got diffracted. तो इस एक्सपेरिमेंट से दो चीजें तो फॉर श्योर क्लियर हो गई थी. एक्सरे का क्या होगा कुछ नहीं पता था. व्हाट द फ्यूचर ऑफ एक्सरे विल बी नो वन नोज. बट टू थिंग वर क्लियर, दैट दिस अननोन रे, दैट इज एक्सरे, इज अ वेव. ये चीज तो क्लियर हो गई थी. एंड द अदर थिंग इज द एटम्स मींस द क्रिस्टल्स आर अरेंज्ड इन अ पीरियोडिक मैनर. ये दो चीजें क्लियर हो गई थी. बट ऑब्वियसली ही गॉट सक्सेस, तो देन ही इज गोइंग टू परफॉर्म. ओके, क्या क्या उन्होंने, लेट्स सी. ओके, सो व्हाट ही डिड, he has considered, okay, he has considered some atoms, means lattice points. इन सब पे इन्होंने एटम्स को यहाँ पर कंसीडर किया. दिख रहा है? नहीं दिख रहा होगा ना. दूसरा कलर ले लेते हैं. ओके, अभी हमने ब्रैग्स की कोई बात नहीं की है. वी डिडंट डिस्कस अबाउट द ब्रैग्स. ब्रैग्स तो अभी चुपचाप बैठा हुआ है. यहाँ सारा खेल लॉ कर रहा है. ओके, नाउ व्हाट ही डिड, ही जस्ट सिंपली हिट द, एक रे को लिया और इस एटम पे हिट कर दिया. ओके, वन एक्सरे केम एंड हिट ऑन दिस एटम. अच्छा, हुआ क्या फिर? जैसे ही एक्सरे ने इस एटम को हिट किया, एज एक्सरे हिट दिस एटम, द इलेक्ट्रॉन ऑफ दिस एटम गॉट एक्साइटेड एंड दे हैव प्रोड्यूस्ड द अनदर वेव. उन्होंने ये जो रिफ्लेक्शन आप देखते हो ना, लॉ की थ्योरी के अकॉर्डिंग, वो जो रिफ्रैक्शन होता है, जो डिफ्रैक्शन होता है रे का, वो ये इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस करते हैं. ओके, बट ऐसा तो है नहीं ना कि डिफ्रैक्शन सिर्फ ऐसे आया और मतलब एक रे पड़ी और डिफ्रैक्शन सिर्फ इसी डायरेक्शन में होगा. दिस इज नॉट क्वाइट पॉसिबल. डिफ्रैक्शन शुड बी इन एनी डायरेक्शन. किसी भी डायरेक्शन में डिफ्रैक्शन हो सकता है. इज देयर एनी मींस एनी स्पेसिफिक डायरेक्शन फॉर द डिफ्रैक्शन? नो ना भाई, किसी भी डायरेक्शन में डिफ्रैक्शन हो सकता है. फिर चीजें उलझ गई. ये क्या हो रहा है? और ये भी बात नहीं है कि एक्सरे आएगा तो सिर्फ एक एटम पे पड़ेगा. So the X-ray will fall, it doesn't mean that it will fall on a simple only one atom. It will fall on every atom. हर एक एटम पे पड़ेगा. और सभी से कुछ ना कुछ डिफ्रैक्शन वे जो है ना डेविएट होगी. ओके, सो ऑल द थिंग्स गॉट क्लमजी. सब कुछ मतलब जो बेसिक आइडिया था कि क्रिस्टल को स्टडी करेंगे, वो नहीं हो पाया. सारे कुछ रेज भाई इधर गए, कुछ यू गए, कुछ आपस में मिले. वी ऑल नो द कॉन्सेप्ट ऑफ फेज डिफरेंस. Those who were in the same phase got add up. Those who were in opposite phase, they got cancel each other. Overall, this Loy concept was means solid. Basic nature जो था theory का, वो इन्होंने ही दिया कि there is a X-ray is a wave, then it should diffract on while hitting on the atom. But they was not able to execute their theory. Although he got the Nobel Prize, उन्होंने इन्हें इतने के लिए ही नोबेल प्राइज इन्हें मिल गया. But he did not able to get the execute their plans. जो इन्होंने बोला था वो ये execute नहीं कर पाए. Execution means what? Execution means the study of the crystal. Anyone was saying something? Okay. So the execution means what? Execution means the study of the crystal. कुछ भी नहीं पता चल पाया.
एक तो इन्होंने स्टडी कर भी लिया, वो भी गलत हो गया. ओके, सो ऑल्दो द बेसिक कॉन्सेप्ट गिव बाय द लॉ, माय लॉ, जो भी आप प्रोनाउंशिएट कर दो, लॉ ले व्हाटएवर. ओके, बट ही डिड नॉट एग्जीक्यूट देयर प्लान्स. नाउ द जीनियस ब्रैग्स कम्स इन अ पिक्चर. ब्रैग्स अब आते हैं वापस. ब्रैग्स ने कहा ठीक है, अब मैं कुछ बताता हूं, आप वो सुनो. व्हाट ही सेड, मैं आज ही खत्म करूंगा इसको. ओके, इफ 5 or 10 minutes विल टेक एक्स्ट्रा, डोंट वरी. उन्होंने क्या कहा, he said, okay, you have taken this atom, it is quite, is visible, no, you have taken this atom or this lattice point. okay, देखना चेंज किया ब्रैग्स ने, कहां पर जाके सारा खेल सही हो गया. ओके, he said, I am taking, this is my theory, Bragg said, this is my theory, that the ray which are hitting, it does not hit the atoms. बात ध्यान से समझना, बात ध्यान से समझना. The ray which are hitting here, अभी मैं हिट नहीं कर रहा हूं. ओके, it will not hit the atom actually, it will hit the planes, it will hit the प्लेन्स. उन्होंने प्लेन का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस कर दिया इसमें कि भाई ये जो आप देख रहे हो ना, दीज आर द प्लेन्स, दीज आर एक्चुअली द प्लेन्स. ओके, दीज आर प्लेन्स. ये एक प्लेन है पूरा का पूरा. और कैसा प्लेन है, दिस इज रिफ्लेक्टिव प्लेन. ऐसा प्लेन है जिस पर, इस पे जब एक्सरे हिट करता है वो रिफ्लेक्ट हो जाता है. डिफ्रैक्शन से थ्योरी को चेंज कर दिया रिफ्लेक्शन में. बात ध्यान समझना, इंटरेस्टिंग है. आई डोंट नो इफ एनीवन हैज गॉट लिसन दिस थिंग और नॉट, बट ये ट्रू है. इन्होंने क्या किया, व्हाट ही हैड डन, डिफ्रैक्शन के कॉन्सेप्ट को, जो कि हो रहा है, दिख रहा है, he has changed this concept into the reflection. What he said, he said the ray will hit on this plane, will get reflected. will get reflected. और भी इसका मैं प्रूफ भी आपको देता हूं, आप खुद कहोगे यस. देखो, it will get reflected. एक्चुअली एटम पे हिट कर रहा है, बट बेसिकली इट इज हिटिंग ऑन द प्लेन. जिसने भी 2d sin theta इक्वल टू n लैम्डा का डेरिवेशन किया है, उनको पता होगा दैट दिस एंगल वी कंसीडर एज थीटा, and this angle is also theta. And what is this condition? किसकी कंडीशन है? हाइगन प्रिंसिपल याद है? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन. किसी के दिमाग में आया उस टाइम पे पढ़ते रहे, ये तो रिफ्लेक्शन है, डिफ्रैक्शन कहां से बात हो रही है? ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कुछ नहीं किया, लॉ के ही कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाया. He has just introduced the concept of law जो उन्होंने दिया हुआ था. But the genius mind of Bragg did the job here. What he has taken the plane instead of atoms. Atom की जगह उन्होंने प्लेन कंसीडर कर लिया कि अब भाई जो भी रे आएगी वो इस प्लेन पे हिट करके रिफ्लेक्ट कर जाएगी, जो भी आएगी हिट करके रिफ्लेक्ट कर जाएगी. तो भाई क्वेश्चन था कि अच्छा, ले के कॉन्सेप्ट में, द कॉन्सेप्ट गिवन बाय द लॉ या ले, आई जस्ट डिडंट प्रोनाउंशिएट हिज नेम, लॉ एक्चुअली बोलते हैं, लियो बोलते हैं उसको, ठीक है ना. Anyone said that okay, what about the diffraction which is hitting around this? इस इधर से जो हो रहा है उसके लिए आप क्या करोगे? भाई ये तो ऑब्वियस है ना कि जब रे आएगा, हिट करेगा और डिफ्रैक्शन हर तरफ होगा, इन 3 डायमेंशन हर तरफ होगा, तो जो रे इधर से आ रहा है उसके लिए आप क्या करोगे? तो उन्होंने कहा उसके लिए भी प्लेन मान लो. यू कैन ऑल्सो टेक अ प्लेन इन दिस डायरेक्शन. मैंने बताया था ना आपको, कॉन्सेप्ट, प्लेन का कॉन्सेप्ट क्या है? कोई जरूरी है प्लेन ऐसे ही होगा? भाई प्लेन ऐसे भी हो सकता है ना, प्लेन ऐसे भी हो सकता है ना. ओके, बेसिकली he has used the concept of plane to describe the XRD, that is X-ray diffraction, and he used that okay, the angle of incident theta will be same as the angle of the diffraction or reflection.
अच्छा, एक बात हमेशा ध्यान रखना फॉर द क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू, हमेशा ध्यान रखना, जो ये थीटा लेते हैं ना, कल मैं डेरिवेशन इसका कराऊंगा, आई विल डू द डेरिवेशन टुमारो। जो ये थीटा लेते हैं ना, हमेशा इस नॉर्मल प्लेन के साथ बनेगा। प्लीज एवरीवन नोटिस हियर, द थीटा विल बी मेड विद द प्लेन, नॉट विद द नॉर्मल। नॉर्मल के साथ नहीं बनेगा। अगर इफ इन एनी क्वेश्चन देयर इज अ थीटा गिवन इन नॉर्मल्स, नॉर्मल के टर्म में दिया है, देन यू हैव टू बी यूज 90 माइनस थीटा, ध्यान रखना। ओके, द थीटा शुड बी मेड विद द प्लेन। यहां तक बात क्लियर है? किसी को हाँ, रिफ्लेक्शन के वजह से हमें डिफ्रैक्शन सी हो रहा है डिफ्रैक्शन, ये बात समझो। डिफ्रैक्शन मीन्स व्हाट? हिटिंग ऑन द ऑब्स्टेकल। ओके, बट ही हैज इंट्रोड्यूस सम न्यू कॉन्सेप्ट। उन्होंने कहा कि ये डिफ्रैक्शन हो तो रहा है, बट ये जो क्लमजीनेस आ जा रहा है ना, ये जो क्लमजीनेस लॉ की थ्योरी में आया था, उसको रिजॉल्व करने के लिए उन्होंने प्लेन का कॉन्सेप्ट दे दिया, एंड दिस पार्ट ऑफ हिज प्लान सक्सीड। ओके, सो अच्छा आप ये देखो ना, बेसिक जो बेसिक चीज है ना, कि ये रिफ्लेक्शन का कॉन्सेप्ट कहां से है, वो यहीं से है। देखो ना, दिख तो रहा है, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है ना? आप देखना बुक्स पढ़ना। देखो मैं आपको बता रहा हूं, एवरीवन नोज दैट ब्रैग्स गॉट द नोबेल प्राइज। एवरीवन नोज that he got the Nobel Prize for what? 2D sin theta is equal to n lambda. No, he does not get the Nobel Prize for that. That was mathematics. He got the Nobel Prize for the inclusion of the concept of planes. Okay, इन्होंने प्लेन का कॉन्सेप्ट यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया, दैट्स व्हाई ही गॉट द नोबेल प्राइज। 2D sin theta lambda पार्ट डिफरेंस को कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के इक्वल कर देना है। इंटरफेरेंस डिफ्रैक्शन पहले ही आ चुका था। इंटरफेरेंस डिफ्रैक्शन हैज बीन ऑलरेडी मींस कम इन द पिक्चर वेरी अर्लियर। सो व्हाट ही हैड डन सो न्यू, आप खुद सोचो ना, व्हाट ही हैज डन सम न्यू सो दैट ही आर एबल टू गेट द नोबेल प्राइज just to take the part difference is equal to n lambda? No, that was the some other picture of his theory. The main picture is the introduction of the plane को लेकर आए कि यहाँ पर पड़ेगा और यहाँ से एक मिरर की तरह काम करेगा ये प्लेन। दिस प्लेन विल एक्ट एज अ मिरर। ओके, आप गूगल पे सर्च करना, उनकी जो थ्योरी आई है ना, जो भी उनके नोबेल प्राइज पे जो थ्योरी आई है ब्रैग्स की, उस पे उनके कुछ स्टेटमेंट्स आप गूगल पे सर्च करना, आपको दिखेगा। यही मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में, तो टाइम हो रहा है, क्लास भी है नेक्स्ट क्लास, सो मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में। अभी इस चीज़ को ना आगे कंटिन्यू करेंगे, डोंट वरी। ओके, इट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग। सी प्लेन्स बना के, रे गिरा के, 2D sin theta and lambda, क्वाइट इजी, आप बुक में भी देख सकते हो। बट एक्चुअल थिंग्स वाज हियर, कि भाई ये कैसे आया है पिक्चर में। ओके, क्लियर है? कल बात करेंगे आगे इसके बारे में। ओके ओके, थैंक यू सर। थैंक यू। मजा आया क्लास में आज? Thank you, sir. Sir. Yes, sir. ठीक थैंक यू है, सर। किसी को पता था ये थ्योरी इससे पहले? एनीवन? नहीं सर। No, sir. everyone, you guys, everyone know about the 2D sin theta equal to n lambda, right? To be honest, that's why I have taken 15 to 20 minutes on this. Okay, that was a matter of 5 minutes to derive 2D sin theta equal to lambda, but वो हमारा काम नहीं है ना। See you. थैंक यू सर। Thank you. Thank you, sir.